viewers, if you like my videos, then please subscribe the channel and click on the bell icon. Assalamu alaikum to all of you. So we have started our session from Mr. Zeeshan Javed regarding the today's topic that is based on the missing points of the SDGs, and we have discussed the strategies and the policies that should be adopted for the next upcoming future for the 2030 regarding the today's topic. Sir, please. Thank you so much, Zeeshan Javed sir, and thank you so much to all our panelists and participants. In our last discussion, we discussed about the SDGs, the Sustainable Development Goals. Or in today's topic, yes, we are going to discuss on a very specific area, which is actually still on the question mark, that how all the goals can be achieved where you don't have any proper indicators. तो इस हवाले से 2030 का जो इन्होंने गोल सेट किया हुआ है, मैं अपने व्यूअर्स के लिए ये बात कहना चाहूँगा कि अगर इस वीडियो के हवाले से आप अगर हमारी प्रीवियस रिकॉर्डिंग को फॉलो करें तो आप टॉपिक के साथ कनेक्ट हो जाएंगे कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो जो हमारा प्रीवियस डिस्कशन था लास्ट वीक, लास्ट फ्राइडे को, तो उससे कनेक्टेड है और उसी का ही एक अगला पार्ट है। ग्लोबली हमने जो यूनाइटेड नेशंस है उसने 17 एरियाज को आइडेंटिफाई किया है, जिसको दी 17 गोल्स फॉर SDGs के नाम से जाना जाता है। उसमें ग्लोबली जो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क डेवलप होता है, दैट इज के हाउ यू विल मॉनिटर और हाउ यू विल गेट द नंबर्स, कि कहाँ पर इन 17 गोल्स के हवाले से कहाँ पे क्या इश्यूज हैं, किस तरीके से उसको टेक केयर करने की ज़रूरत है, किस तरीके से मॉनिटर करने की ज़रूरत है। डेफिनेटली अगर मैं स्टैटिस्टिकल लैंग्वेज के हवाले से बात करूं तो यू शुड नीड अ नंबर्स ना, you should need to have numbers so that you can properly evaluate what you have implemented and what you are required to do, कि ताकि उसके अंदर इम्प्रूवमेंट लाई जा सके, बेहतरी लाई जा सके। अब इस वक्त आके जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के हवाले से, SDGs के हवाले से ग्लोबली डिस्कशन कुछ ज़्यादा बढ़ गई है। अदरवाइज ये जो सारा मामला है ये तकरीबन 1 डिकेड अगो इसके ऊपर काम शुरू किया गया था। बाद में 2015-16 में आके इसको 17 पॉइंट्स पे जाके लॉक किया गया था कि जी ये हमारे 17 गोल्स हैं जिसको जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDGs कंसिडर किए जाएंगे, कहलाए जाएंगे। Now the question mark is still we are ending with 2023 and we are just starting stepping up in the year of 2024. तो यहाँ पर ग्लोबली इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा अब डिबेट हो रही है। लाइक नाउ 2030 का जो इनका एजेंडा है, जिसके अंदर ये प्लान ये करते हैं यूनाइटेड नेशंस में के इदारे जो है हमारा ग्लोबली जो इस चीज़ को वो प्लान करते हैं, वो ये कि ओवरऑल कोई भी किसी भी एंड से जो है वो रह ना जाए। लाइक ये बड़ा अच्छा एक टर्म है, लिविंग नो वन बिहाइंड। तो इसका मतलब ये है कि वो अपना एक टारगेट सेट करते हैं कि 2030 तक इन 17 गोल्स के ऊपर इस तरीके से इंडिकेटर्स को वर्ल्ड वाइड ग्लोबली सेट कर दिया जाए जहां से इनके पास प्रॉपरली नंबर्स आना शुरू हो जाएं, और जहां पे कोई भी बंदा, कोई भी कंट्री उस कंट्री का कोई भी किसी भी जनरेशन से ताल्लुक़ रखता हो, किसी भी लाइक अगर हम कहें कोई भी मेंबर या कोई भी ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन
द बेटर वर्ड इज कि वो रह ना जाए, ताकि वो तमाम के तमाम लोग जो हैं वो अपने एक नंबर्स के अंदर आ जाएं, और वहाँ पे फिर इस चीज़ को प्रॉपरली देखा जाए कि अब कहाँ पे गैप मौजूद है कि इन 17 गोल्स को फॉलो करते हुए अगर इसके अंदर कहीं पर कोई गैप नज़र आता है तो उस गैप को किस तरीके से ओवरकम किया जाए या उस गैप को फिल किया जाए। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है, यस, ग्लोबली एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसके ऊपर ऑलरेडी काफ़ी काम हुआ है, बहुत सारे कंट्रीज में इसके ऊपर काम हो चुका है और इंडिकेटर्स बनना शुरू हो गए हैं, बट स्टिल एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि ये यूनाइटेड नेशंस के लेवल पे इनकी जो टीम है, उस इदारे का नाम ये लोग लेते हैं IAEG, SDGs, the Inter-Agency and Expert Group on Sustainable Development Goal Indicators। तो ये टीम जो है बेसिकली इसके ऊपर काफ़ी काम कर रही है, जहाँ तक मैंने इस पूरे टॉपिक को स्टडी किया है और इस हवाले से देखा है। तो होपफुली कि आगे चल के और ज़्यादा बेहतर इम्प्रूवमेंट्स इस हवाले से जो है वो हमारे पास आएंगी और अच्छे नंबर्स आएंगे। अभी तक तो ये कह रहे हैं कि 193 कंट्रीज विल हैव टू कंपाइल द डाटा फॉर इंडिकेटर्स। तो अभी भी एक बहुत बड़ा गैप मौजूद है जिसको फिल करने की ज़रूरत है। तो आई बिलीव कि मैं ये समझता हूँ, और जो चीज़ मुझे नज़र आती है वो ये है कि कंट्री लेवल पे इस चीज़ को थोड़ा सीरियस लेने की ज़रूरत है। जैसा कि हमने अपनी लास्ट डिस्कशन में बात की थी कि ये जितने भी 17 पॉइंट्स हैं, ये तमाम के तमाम 17 पॉइंट्स वो हैं जो ऑलरेडी हम जानते हैं कि ये होना चाहिए। लाइक 17 पॉइंट्स के 17 गोल्स के अंदर अगर हम बात करें, ये कहते हैं नो पॉवर्टी, ठीक है जी, नो हंगर। अगर ये तमाम चीज़ें हम बोलते हैं तो इसका मतलब हम ऑलरेडी हम जानते हैं कि ये लाइफ बिलो सी, लाइफ अबव सी, ऑन द लैंड। तो वी ऑलरेडी नो दैट हायर एक अच्छी एजुकेशन, एक अच्छा एनवायरनमेंट, हम सब जानते हैं इस हवाले से। बट डेफिनेटली इस चीज़ के ऊपर काम तभी हो सकता है जब सब मिल के एक लाइक एक ही एक फ्रेम के अंदर रहते हुए इसके ऊपर काम करें, और एक ही पॉइंट्स को, एक प्रॉपर पॉइंट्स को सामने रखते हुए और एक ही स्पेसिफिक एजेंडास को सामने रखते हुए उसके ऊपर काम करें। तो यहाँ पे मैं अपनी डिस्कशन जो है वो फिलहाल कंप्लीट कर रहा हूँ ज़ीशान जावेद साहब, ताकि बाकियों को भी कुछ कहने का मौका मिले। इंशाल्लाह इस पे फर्दर फिर हम बात करते हैं, मौका मिलता है तो। थैंक यू। Thank you so much, Zeeshan. I look forward to you again. I requested Ms. Nuzat over here, and thank you so much for your time and availability and what you have shared experience and ideas regarding the today's session. All right, good evening and assalamu alaikum everybody. Yes, I'm Nuzat Umar, and thank you so much, Zeeshan. Thank you everybody for being here. I believe more in implementable solutions. Since we have so many trainers in this session, so I personally feel that nothing can be done unless we train the teachers. Do you agree with me? Okay. Yeah. So I'm glad that I have been implementing SDGs for the past 5 years. We started with the Beacon House and British Council project, ISA, and then connecting classrooms. And when we evaluated those projects, we got to know that it's so important for us to first train the teachers. There are many teachers and many schools in our country that have no idea what SDGs are, what is the significance, and why should we focus on SDGs? If we want to meet the international world, then we really need to make sure that each and every school in our country, be it a private school, be it a government school, should know what SDGs are, because it's not one man show. It's always we. Exactly. And there are also some challenges. Not just we read about something, bring it to the school, we start implementing. No, there are always challenges as well. And the biggest challenge is awareness. People don't know what they are, why should we implement them. And another thing that I faced is schools are running projects, right? But they have not been as successful as
I was expecting or as the other intellectuals are expecting. So I think we need to come up with some framework, some strategies that can really help us implement SDGs and then, get the, the results that we are looking for. And I think here I would like to appreciate British Council for taking it seriously in Pakistan. Okay, okay, thank you. Thank you, Nuzar. I came out of you again. After that, I requested Mr. Faisal Sheikh to kindly elaborate and share experience or ideas about today's session that is based on the SDGs. Assalamu alaikum, all of you. Walaikum assalam. वालेकुम अस्सलाम। थोड़ा सा मैं आउटसाइड पे हूँ तो मैं अपनी कैमरा ऑन नहीं कर पाऊंगा, बट रिगार्डिंग माय No problem. एसडीजी, रिगार्डिंग एसडीजी जो इस वक्त बड़ा फोकस हो रहा है इन द वर्ल्ड एंड एवरीवन, यूएन की तरफ से भी एंड एवरीवन द यूनिवर्सिटीज साइड पे, even our state bank has following this sustainable side, and even all the organization also focusing on that. But I have been looking after the major 2 to 3 parts of the SDG goals. Just thoda sa I am working on that, and I've been looking after that. One is the sustainable finance, and जिसपे इस वक्त sustainable financing करनी है in the field of different side, जिसमें central bank का एक major role है, and the banking को भी उस पे हम focus कर रहे हैं, and to focusing on that to be the financing and for the long term and the planning for that. And the secondly, the mostly important in the sustainable finance is the climate change. So we have to focus on the banking side to all the जो climate change को effects कर रहे हैं, that should be you can keep on the minimum capital requirement on that, and they have to be a more probability of default as compared to the before. So जिसमें आपके पास ग्रीन हाउस गैसेस की ज्यादा हो रही है, उनको फोकस करना है। और अगले इस वक्त जो हमने प्लान बनाया है, दैट इज द 3 to 10 years के प्लान्स, एंड उस हिसाब से आपकी जो फाइनेंसिंग है टू दीज सेक्टर्स, जिसमें ऑटोमोबाइल ट्रांसपोर्टेशन को लुक आफ्टर कर रहे हैं, सीमेंट्स को लुक आफ्टर कर रहे हैं, और जिन जिन में कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा हो रहा है तो उस पे फाइनेंसिंग की कॉस्ट को बढ़ाया जाएगा, एंड द थ्रेट ऑन दैट सेक्टर। थर्डली, द मोस्टली जो सस्टेनेबल क्लाइमेट की साइड पे आ रहा है, एंड दैट इज द मोर फोकस ऑन दैट, के जिस पे एनर्जी रिन्यूएबल साइड पे और इस पे वी आर वर्किंग ऑन दैट। तो उस पे ग्रीन बैंकिंग हो गई, क्लाइमेट चेंज हो गया, तो वी आर वर्किंग ऑन दैट। तो ये एक सस्टेनेबल गोल का है। तीसरा, मैं इस वक्त जिस चीज को मैं रीड कर रहा हूँ, जिस पे फोकस हो रहा है, बट माय पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा है, मे बी आई एम रॉन्ग और राइट, दैट इज अ जेंडर इक्वलिटी पे जो इस वक्त काम हो रहा है, उससे मे बी आई एम रॉन्ग, मे बी आई एम राइट, बट द फैक्टर इज दैट You are doing right. Carry on, please. Yeah, I think mostly there are the 3 females, ऐसे ना वो कोई बात पे mind करे, but it's my view on that. Therefore, I'm saying that the focus is that the most of the organization has to be 40% of the female staff there should be. They have a plan. The State Bank is also planning, and the banking sector and other sectors is planning for the 2025. There should be a 40% female staff, and the 60% should be the male staff, and the mostly जिस पे gender equality पे हो रही है बात, उस पे थोड़ा सा I'm focusing on that. उसकी वजह से in future might be we may see some problem in the site, और जो इस वक्त पूरी दुनिया में the 2 factors or the 3 factors is increasing, maybe वो boost up हो जाए. The one factor is जो the divorce ratio is might be, इसमें थोड़ी सी मेरी है रिसर्च थोड़ी कर रहा हूँ, तो इस वजह से मैं अपने उस हिसाब से जा रहा हूँ। सो एक वो एंगल इस पे थोड़ा सा इंक्रीज हो सकता है, बिकॉज ऑफ द इंडिपेंडेंट वुमेन्स इज बिकम मोर, एंड देन द इश्यूज विल स्टार्ट,
एंड इसी में फिर एक अगर आप थोड़ा सा इसमें पाकिस्तान की साइड पे जो आया है, दैट इज अ ट्रांसजेंडर इश्यूज पे उन्होंने किया है. बट देन द वर्ल्ड, जो अगर आप बात करेंगे अगर यूरोप साइड और अमेरिका साइड, उस पे एलजीबीटी पे बहुत तेजी के साथ इसी साइड पे काम हो रहा है. और उसमें अगर आप इस वक्त अगर स्कूल्स में देखा जाए, जो मेरी अभी रिसर्च कर रहा हूँ, तो वहां पे ये हो रहा है कि बिफोर द 12 years ऑफ द kid age, you don't have to mention the he or she. You don't have to mention. And after the 12 years, they have to think about themselves and they have to decide, I'm male or I'm a boy or a girl. This is the major issue in the world, and we are moving there. So, but this is also the factor of the UN, but all the countries has to follow it. तो इसमें मुझे लगता है कि इसमें थोड़े प्रॉब्लम्स आएंगे कुछ कंट्रीज में, बट लेट्स सी व्हाट्स गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर. बट इसमें थोड़ा सा एक क्वेश्चन मार्क है जिसपे थोड़ी सी आई एम आल्सो वर्किंग ऑन दैट. मैं रिसर्च कर रहा हूँ कुछ कंट्रीज पे कहाँ कहाँ पे ये हो रहा है और इसका इम्पैक्ट क्या होगा. बट मीनवाइल राइट नाउ आई वुड से कि मेरा यहाँ तक ये. सो जो उस पे ज्यादा फोकस इस वक्त मैं देख रहा हूँ, दैट सस्टेनेबल फाइनेंस एंड द क्लाइमेट चेंज पे. It's mostly my topics, and I am doing on that. I have given so many trainings on that climate change and the sustainable finance. Meanwhile, any question you have to ask about the SDG on this side, I have some more information on that side. Thank you so much, Professor Jake. I know that you are working on a climate change and sustainable development as well, and you are giving trainings as well, and you are the key part member of this platform to engage in upcoming training sessions along with Career Bista platforms. Yes, exactly. As per the principles of the UN of regarding the SDGs, the goal of the SDG 2030, that is means agenda जो basically 2030 के sustainable development के वाले से है, that is to end the poverty and hunger. That is the main thing. So to realize the human rights of all, achieve gender equality and the empowerment of all the women and girls, and ensures the lasting protection of the climate and natural resources. That is the main theme and main agenda of the 2030 as suggested by the SDGs. Ms. Sadia is here among with us regarding the today's topic. What you have suggested regarding the today's topic that is based on SDGs agenda. Sorry. Assalamu alaikum, everyone. Today's our topic is SDGs indicators. Can you hear me, everyone? Yes. Yes, we can. Okay, fine. Okay, fine. Thank you. Okay, the first we would like to, as you can all say, that the goals is no poverty, good health, and well-being, quality education. These are the basic things we have discussed in our last webinar. Now we are supposed to say that SDGs and their indicators. Today we are supposed to say that goals, we have discussed climate action, peace, justice, and strong institutions. The main issue of the SDGs is the strong institutions are not over there. Law is not here. Basic law is not here to approve or indicate something regarding education, regarding climate, regarding justice, regarding affordability, or another gender equality. There are some reasons behind that all the SDGs, and strong institutions are the major issues that victim of violence in the last 12 months. The reported over there, and the partnership for the goals is number of countries reporting progress in multi-holder development effectiveness, but somehow effectiveness monitoring framework कोई नहीं है. इनको कोई monitor नहीं कर सकता, इनको कोई assess नहीं in a proper way. These are just a few examples which I gave to the several indicators with specific measurement criteria. And let's hope for the best. Can I add something? Yes, you can add. You are not audible, Ms. Nazar.
Okay. Am I audible now? Now you are. Okay, thank you so Yes. much. This is what Ms. Sadia, I talked about that, first we need to train the teachers. There are many schools in this country, there are many teachers who don't even know what SDGs are. Okay, so training is the most important thing. Then again, for training, we need finance. We need economical strength as well. There are many schools that are not ready to invest in training. I'm not going to name them, but yes, there are many private schools and they have many branches across the country and some have international branches as well, but they're not ready to invest in teacher training. So if we don't train the teachers, how can they train the children? So once the children are not trained, how can we have a successful future of this country? And how can we meet the international standards? So I'm so glad that Sir Zeeshan has taken initiative. So we need such people in our society that can really bring a change. The first thing is awareness. Let them know what it is, right? Then, of course, if there will be a number of people who know what SDGs are, then maybe some of them, just like Solution, start working on them and we get some financial support from the government. Okay, I fine, totally fine. agree with you, Miss Nuzat. Thank you, It's a Miss. basic. Can I add one thing? Yeah. मैडम नुसरत की मैं बात कर रहा था आपकी हमें हमें हमेशा यही होता है कि वी नीड गवर्नमेंट सपोर्ट एंड एवरीथिंग बट एज आई हैव बीन टीचिंग इन द यूनिवर्सिटी साइड एंड एवरीथिंग सो जो हमारी एचईसी की तरफ से भी होता है वो भी सही फोकस नहीं होता एंड ऑल द फोकस बट आई पर्सनली बिलीव दैट कि हमें जितना हो सके हमें खुद से करना है we have to inform, we have to give the knowledge to our students, whatever the possibility, whatever the platform we have. जो सर कर रहे हैं वो भी है दूसरे अगर कहीं पे भी सेमिनार्स या कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट भी हो we have to inform that secondly अगर जो आप फैकल्टी की बात करते हैं तो मैंने जो सबसे जो एक देखा हुआ है I've seen that one problem in our society we have a mostly the permanent faculty and they never invest on the permanent faculty and even they are not hiring the visiting faculty for the different courses so because the visiting faculties या different जो teachers होते हैं जो corporate में काम कर रहे हैं they know the what is happening in the market and they have to inform the students के what have been changes happening in the market so ये भी एक बड़ा हमारे पास issues है तो आई नो द गवर्नमेंट इसमें कुछ इतना नहीं करेगी गवर्नमेंट हमारी तभी करेगी जब सब चीजें हो जाती हैं दुनिया में हम 10 साल 15 साल के बाद ही करते हैं बट अल्लाह का शुक्र है कि हम सब जैसे आप लोग हैं हम लोग थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है वी हैव टू शेयर विद अदर वी हैव टू एग्जैक्टली फैसल मैं आपकी बात को सेकंड करूंगा दिस इज द थिंग्स कि वी हैव टू टेक एक्शन अबाउट द थिंग्स वी हैव टू कोलैबोरेट अमंग ईच अदर we have to spread the voice of the things we have to spread the voice of the training and development programs spread the voice of the learning and development skills in the different varieties in the upcoming future sustainable development workforce enforcement along with that climate change these are all things which we have to reproduce the things in the market to create an impact in the mindset of the people that how it works yes Nuzat are you saying All right, something? Yes, sir, I want to. If you allow me. Yes, we are listening. Okay, so I want to give you an example of deforestation. Then we talk about climate, we talk about economical growth, we talk about saving resources as well. So I'm so glad that my school had been working a lot for the past 6 years. We discourage deforestation. We tried to plant some trees outside the school, inside the school. And what else we did and what I really liked was that we have ensured a paper-free environment. And thanks to COVID, because during COVID, we all shifted to the online classes and we use technology a lot. Instead of those paperback and folders, we started making e-folders. That was also a good strategy to reduce papers from the school. Because if the schools are teaching deforestation should be discouraged, and if the school themselves are using a lot of paper in meetings, in training sessions,
in different activities, then we are not doing what we are claiming. So as you said, that it always starts with me. So we have to do something. So this was the initiative that my school took, and I'm really proud of that. So if all of the schools and all universities on their own, they start working on a paper-free environment, I'm not saying that there should not be any paper. Of course, sometimes we do need, but at least we can reduce to 50 to 60%, and we can save the environment because we need trees all around it. Thank you, Sudas. Thank you so much. We will discuss these things in the upcoming future webinars as well, and we collaborate with each person, get the ideas and the reviews regarding the upcoming sessions as well. I requested Ms. Zeeshan Javed to finalize out the things and conclude out with the feedback, please. All right, Ji. Thank you so much, Miss Nuzhat, Faisal Sheikh Sahab, Miss Sadia Aftab. Well, it's really nice to have you all on board because हम जब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं तो लाइक एक अलग ही एक एनवायरनमेंट निकल जाता है और एक बहुत ही अच्छी एक हमारी डिस्कशन जो है वो चलना शुरू हो जाती है. इट्स रियली गुड फॉर ऑल ऑफ अस एंड स्पेसिफिकली फॉर ऑल आर व्यूअर्स. जितना अच्छा हम इंफॉर्मेटिव हमारा वेबिनार होगा उतना ही अच्छा हम आगे कम्युनिकेट पर इवन what we are doing now is also a part of SDG, क्योंकि हम एक इंफॉर्मेशन जो है वो कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं. जैसा कि फैसल शेख साहब ने कहा कि हमें कोई भी प्लेटफॉर्म जो है वो छोड़ना नहीं चाहिए. तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट वे जहाँ पे हम एटलीस्ट ये काम तो कर सकते हैं कि खुद तो हम चलो किसी चीज़ छोटी मोटी चीज़ों में स्टेप इन हो रहे हैं, बट फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म वी कैन कनेक्ट ऑलमोस्ट पीपल्स जो कि हमारी व्यूअरशिप के तौर पे इस चीज़ को देखते हुए हो सकता है कि उनमें से कोई भी इस चीज़ पे अमल करना शुरू कर दे और पॉसिबली इसी तरीके से इंडिविजुअल कैपेसिटी के ऊपर हम कनेक्ट होते जाएं और SDGs के ऊपर काम करते रहें. मैं इसको कनेक्ट करूँगा लाइक हमारा फैटफ कंप्लाइंस फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, सिंस आई एम ऑल्सो AML CFT स्पेशलिस्ट कैन से. तो बेसिकली जब पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से वाइट लिस्ट में डालने की बात आई तो फैटफ कंप्लाइंस के ऊपर जोर उठा और उसके ऊपर फिर वर्ल्ड वाइड लाइक इन पाकिस्तान बात की जाए तो पाकिस्तान के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है वो फैटफ कंप्लाइंस का शोर उठ गया और लाइक ना सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बल्कि NBFCs NDFIs तमाम इदारे जो हैं वो इसकी कंप्लाइंस में लग गए जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि जी आवाज़ आ गई है और अब जो है हमने पाकिस्तान को चूंकि प्रेशर आ गया है तो पाकिस्तान को ग्रे से वाइट में डालना है, तो इसलिए तमाम चीज़ों के ऊपर काम करना पड़ेगा नंबर बढ़ाने के लिए. बिल्कुल ऐसे ही अगर हम SDGs को इसके साथ कनेक्ट करें तो कोई गलत बात नहीं होगी. जब तक ऊपर से एक प्रेशर नहीं बनेगा तो हमारे इदारे जो हैं वो इसके ऊपर सोचना स्टार्ट नहीं करेंगे और जब तक वो सोचना स्टार्ट नहीं करेंगे तब तक शायद मेजॉरिटी जो है वो इस चीज़ के ऊपर एक्टिव नहीं होगी. जो इस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं, जैसे माशाल्लाह मिस नुसरत ने इस चीज़ को हाईलाइट किया यहाँ पे कि जिस स्कूल के साथ ये कनेक्टेड हैं वो इस चीज़ के ऊपर ऑलरेडी काम कर रही हैं और कुछ इदारे हैं जो SDGs को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, बट स्टिल वी हैव अ ह्यूज गैप. हमारे जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि बोन हैं, किसी भी गवर्नमेंट की बोन्स होते हैं, जब तक वो इन तमाम मामलात के ऊपर एक्टिव नहीं होंगे तब तक एक इंडिविजुअल कैपेसिटी के ऊपर हम लोग उस लेवल पे एक्टिव नहीं हो सकते. तो मेरा ये मानना है, आप लोगों के जो ओपिनियंस है वो मुझसे डिफरेंट हो सकते हैं डेफिनेटली, तो लेकिन अल्टीमेटली एक इंडिविजुअल कैपेसिटी के तौर पे इंसान जो कर सकता है उसको डेफिनेटली करना चाहिए. अगर हम एक बड़ा इम्पैक्ट देखना चाह रहे हैं तो इसके लिए फिर हमें गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस जो हैं हमारे, उनको इसके ऊपर एक्टिव होना पड़ेगा और वो तभी एक्टिव होते हैं जो कि हमने पाकिस्तान की हिस्ट्री में देखा है. वो तभी एक्टिव होते हैं जब तक उनके ऊपर प्रेशर नहीं बनता.
जब तक उनके ऊपर प्रेशर नहीं बनता, प्रेशर बनेगा तो वो काम करेंगे। तो ये मेरी तरफ से। बाकी अगर कोई इसके ऊपर पॉइंट ऐड करना चाह रहा है, लाइक रोमाना मंशा ने भी ज्वाइन किया है दोबारा, अगर वो कुछ ऐड करना चाह रही हैं, मिसेस कामरान इन्होंने भी कनेक्ट किया है। ज़ीशान जावेद साहब, अगर आप इनको मौका दें कुछ कहने का, सिंस वी हैव बिल्कुल अराउंड बिल्कुल, श्योर 1.5 मिनट। I think racism, when we talk about global things, platforms, I think racism is the very important thing to focus on. Anybody can hear me? Yes, you are Yes, audible. ma'am, Please, we can. please, We can please. hear you. I think this is the very important thing which we need to focus on, though it's a profession like a corporate level or education system, like from the beginning, as a beginner. Whatever it's the platform is, racism is the very strong, content which is flying among the minds and behaviors. Ma'am Romana, may I add something to it, please? Yeah, sure. Yeah, Ma'am Romana, I agree with you. So just to discourage racism, not only we had mixed communities in our school, but we also made all children from kindergarten till A-levels participate in international projects, right? And our learners work with all communities. Alhamdulillah. Kindly, Romana, continue, please. Kindly, Romana, continue, please. Yeah, this is the major thing which I feel is sitting on the global platform here, that the racism, and definitely we need to train our students on the learning side, like they should be more it should be more focused on creativity. I'm sorry if I'm just running short of the words, like creativity. We need to make our Pakistani children to be more creative. So this is my second point to focus on. Our children are not creative, as nowadays. Children need to be more focused on the internet and search work, and this these kind of assignments. They should be trained that way rather than learning and that rata system. We should be out of it. Exactly. Learning should be in a Exactly. practical way. Learning should be in a practical way, not like just learning blindly without understanding the things. Yeah, Ma'am Romana, I agree with you. Am I right? Like learning is like you are blindly following something. Research works make you more creative when you think with your own mind. It takes you towards innovations. Ma'am Romana, I agree with you. Ma'am, teachers as well as students both need to be good researchers first to implement anything. Yeah. And they from the beginning, at the junior level, how we can make our children to think with their own mind, to when we say the word why, the teachers has to say the word why. Word why makes a brain think. Ma'am Romana, may I add something to it? Yeah, sure. Yeah, ma'am, I really love to example why. So when we plan lessons or when we train teachers for lesson planning and methodologies, we do talk about why. And I want to add a few more words. Why, how come, how can, how might it be, how could? So please, you're very much right over here. The choice of words will trigger their critical thinking skills. So if they're not using critical thinking skills, how can they solve
the local as well as the international problems. When we talk about global issues, we want children to come up to the level that they can be problem solvers. They can't be unless the teachers are trained to use the words why, how, why not? Why not? I'm Yeah. adding one more word, why not? Okay, Mm. how could we not? So that's going to trigger their thinking skills and they will be able to think out of the box. Exactly. I agree. May I add something? Yeah, Sure, sure. Actually, I was agree with you how, when, why, but there is a necessity for how come they overcome their necessities or their curriculum. Because the basic thing is they have to complete their curriculum in specific time. There is some limitations for the teachers or for the admin staff कि आपको ये काम limited time में पूरा करना है. Curriculum, you have to complete the all curriculum. We can use the curriculum in the way of how and why. But We can sometimes use we the need, curriculum. but sometimes we need a trained teachers. Exactly. Yeah. As Miss Nuzat said, कि trained teachers are not more than enough. फिर उस पे दूसरा इशू ये आता है, स्कूल्स पे नहीं करते. टीचर्स कहते हैं जी स्कूल के टीचर हैं, स्कूल वाले करवाएं. बस इसी उसमें आप हम इसी चक्कर में ये चीजें चलती जा रही हैं. So the Ma'am, I would system like issue. to- Yeah, जी, system issue. Yes, of course, System these are all the system issues. Ma'am, I would like to continue something. Mrs. Zeeshan Arif was saying that no, we have to start something on our own as well. We were just discussing about teacher training. Yes, there are a few training projects by the school, but there are some more interesting training projects by the international community, but the schools are not ready to invest in. So what we teachers did, what we did, that we started investing ourselves on our training. So as Mrs. Zeeshan Arif said, we have to do something on our own as well. We didn't wait for the school to invest in us. So what we did, we ourselves started looking for some global training programs. I want to second yours. I want to second yours. My agenda of Career Bista is that building the pathway between the institutions and the corporate sector. When we talk about the institutions, schools, colleges, and universities, they are not able to invest their money on the students through conducting training and development programs. Same is the case of the corporate sector. When we talk about the multinational companies or some other companies, they are not ready to invest their money on the training and development of their employees. When they hire the HR managers or a male or a female, if you want to think about their qualification and his experience, that is not based related to the HR. मैंने बहुत सी ऐसी लिंक्डइन के ऊपर प्रोफाइल्स देखी हैं, मेल्स एंड फीमेल्स, माजरत के साथ विद ड्यू रिस्पेक्ट, के द पीपल males and the females are working on the seat of human resource management designation, but their qualification does not match to their designations. Majorities are masters in English, masters in Urdu, whatever. They are doing the jobs into the companies and started their career with the HR executive, and after 7 to 8 years they call that we are the HR managers of the companies, but they don't know what is recruitment, what is selection, what is training and development programs, and how you rectify the right people at the right time at the right place. The main dilemma. That dilemma is that we are not interested to cope up the things into the employees. हम चाहते ही नहीं हैं कि हमने लर्निंग एंड डेवलपमेंट में काम करना है. We don't want. हमने काम करना है. You, me, Zeeshan, Romana, that we are working on this. कि हम ये चाहते हैं कि we have to create an impact in the mindset of the society, that what we are doing in the market for the upcoming future of their children. Because हम जब तक उनको सिखाएंगे ही नहीं, हम बताएंगे ही नहीं कि काम करना क्या है, किस डायरेक्शन में जाना है, किन स्किल्स को यूज करना है, तो स्टूडेंट just they are wasting the time.
वो ओ लेवल्स का बच्चा बैठ के साइंसेस के साथ ओ लेवल्स कर रहा होता है, जब वो ए लेवल्स में आता है तो साइंसेस छोड़ के अकाउंटिंग, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स में चला जाता है। ए लेवल्स में ग्रेड नहीं आता तो वो कंप्यूटर साइंस में जाता है, कंप्यूटर साइंस में एक्सपेरिमेंट करके कहता है मैं सीए कर लेता हूँ। वो 5 साल एक्सपेरिमेंट ही करता रहता है बैठ के कि मैंने करना क्या है। माँ कह रही है डॉक्टर बना दो, बाप कह रहा है इंजीनियर बना दो, दादा कह रहा है जनाब उसको सीए करा दो, फलाना कह रहा है उसको वो कर दो। यार वेयर इज द सिस्टम? In every semester, being a lecturer, we face the same thing where we ask the students that you done enter in medical and you just started BBA right after doing a medical in intermediate. So here is the question mark. यार उस वक्त मेडिकल क्यों किया? जी वो पेरेंट्स ने कहा था कि मेडिकल कर। अच्छा जी, तो अब बीबीए क्यों? अब बीबीए क्यों? तो वो जी मेडिकल में बात बनी नहीं, नंबर्स नहीं आए, तो इसलिए हम पे बीबीए में आ गए। Actually, अच्छा जी, more than teachers, our parents need to be trained. need to be trained, exactly. Engineering, Actually, especially our mothers, especially yes, our mothers. They are the actual school. The mothers are the actual school. yeah, definitely, These definitely. ये जो हम May I add स्कूलों a में point जाते over हैं, here? ये तो सब ये तो सब सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं। जिन स्कूल्स में हम जाते हैं, सलामत स्कूल, लाहौर ग्रामर, सॉरी टू कॉल आउट द नेम्स, लेकिन ये तो जस्ट सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं। एक्चुअल स्कूल्स आर द होम्स, पेरेंट्स। May I give an example over But here? the basic dilemma is कि how can we train the mother or the father? मेरी यहाँ Can I पे add a point over here? मेरी यहाँ पे एक गुजारिश ये सुन लें कि जिस मदर की बहन के बच्चे डॉक्टर बन रहे होंगे ना, उस मदर ने कहना मेरी बहन के बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं, मेरे भी बनेंगे, ऐसी की तैसी। तो ये जो डायलेमा कॉन्सेप्ट है ना, ये पहले चेंज। वो यहाँ पे ये सीन चल रहा होता है जी कि मेरे फादर ये कह रहे होते हैं जी मेरे भाई के बेटा ने सीएसएस कर लिया, तुमने भी सीएसएस करना, बेटा डॉक्टर बनना चाह रहा है उसको सीएसएस में डाल दिए। आप ये चीजें कैसे कैसे ठीक करेंगे ना? आप कहाँ तक ठीक करेंगे, किस किस तरीके से ठीक करेंगे? या आप स्टूडेंट को बदल लें या आप पेरेंट्स को बदल लें। Sir, दोनों This में is से what एक I'm saying. The parents need to be trained. They need a Um, schooling. Zeeshan sir, sorry. Ma'am Romana, that's why I said in the beginning that we need to train the teachers so the teachers can train the student. The students are the parents of tomorrow. So this is the Schools only can solution take a that I part in this. Schools Yeah, can and play ma'am, I a want very to add strong something. role in that. I want to quote an example over here, everybody. I did a survey in Pakistan, right? And what I got to know that a child who gets A stars is suggested by the parents and aunties and uncles that, you should be a doctor. And the child who gets C's and D's is suggested by everybody, you should be the Hafiz the Quran. And then they send that child to the madrasa, right? Or to the religious teachers. And if we compare this to the Jew society, Jews pick up the brightest children, those who are getting A stars for Judaism, for studying that, right? Now look at their education level and look at our education level. So this is how we treat Quran as well. For Quran, we select the losers and the below average children. So we need to change the society. We need to change the mindset. And we can't do it with the grandparents. We can't do we the don't need grandparents or parents. What we can do, we can train the students. the thing is that we don't need to change the parents. We just need to work on the SDGs. If we focus on the issues of the SDGs, everything should be done in a fair way. If you are seeing that कि जी हम bridging the gap between the academia and resource person, corporate sector को आप change करना चाह रहे हैं, वो तो 2007 से वही चल रहा है, कहाँ तक change करेंगे? The dilemma is that कि we have to put an effort with collisionally and together कि हम SDGs पे काम करें, जो हमारे weak areas हैं उनको pick up करें और उनके ऊपर workout करें, उनके ऊपर socially responsible हो। और it's not a game of one person. We have to put an effort together. Yes, I agreed. Well, sir, I would it's a like to teamwork. add something. Yes, Everyone is Assalamualaikum, presenting very brilliant. Walaikum assalam. Sir, what you have said regarding to today's topic?
Sorry, sir, I got disconnected. Sir, simply put this way that we need to transform our society. We need to have a breakthrough for our own beloved country. I look at this in a different perspective. I think that little remains to be done in order to achieve the SDGs. We have the infrastructure. We have all the routes available. All we need is to improve upon the existing framework. Like sometimes we get depressed by looking at things, but the reality is that in Pakistan, there are enough room is left for the hope, and we can still achieve the SDGs and make our future generations feel proud of our work. All we need is to put our like actions to work for ourselves. We need clear intentions, and we need extreme hard work. So we can actually, in the present era of digital age, we can really easily achieve this if we follow the rules and principles as envisaged in the SDG indicators or SDG agenda. So this is from my side that I'm still hopeful that the education or the poverty or the industrial liaison, everything can get in order if we put ourselves, put the actions together. Thank you. Thank you, sir. Okay. जी जिशान साहब काइंडली इसको फाइनलाइज कंक्लूड विद द एंडिंग पॉइंट्स पे करके हम इस आज की सेशन को वाइंड अप करते हैं प्लीज. All right, Mrs. Kamran wants to say something. Yeah, sure. Assalamu alaikum all. Thank you so much for giving me a chance to talk with you all. बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक के ऊपर बात हो रही थी और हम सब जो एजुकेशनिस्ट जमा हुए हैं एक प्लेटफॉर्म पे to work for the education. From where I have joined the meeting, the basic issue was the cognitive teaching learning method. This is compulsory for conceptual and analytical thinking. Anyone, if we want one of our students should be having the critical thinking, so the teacher must be trained. And the teacher should plan his or her lesson plan in a cognitive basis. अगर तो conceptual और cognitive teaching learning method activity based teaching जो है उसको हम अपना लेते हैं तो जो SDG के educational goals हैं these are too much easy for us to achieve. यहाँ पे हमें mindset change करना है अपने teachers का as a principal, as a leader. When we change the mindset of our teacher, जैसे मिस रोमाना was saying कि practical teaching होनी चाहिए, तो basically she was talking about the cognitive teaching learning method. तो वहाँ पे टीचर्स को थोड़ा हमें मोटिवेट करना है, टीचर्स का माइंडसेट जो है वो चेंज करना है कि वो अपने लेसन प्लानिंग में एक्टिविटी बेस्ड थिंग्स जो कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें जो स्टूडेंट्स की जनरल लाइफ के साथ उस टॉपिक को अटैच करें. दीज आर नेसेसरी पॉइंट्स. तो डेवलपमेंट स्टेज पे दे कैन डू दिस. वहाँ पे गाइडलाइन की ज़रूरत है उन्हें, वहाँ पे उन्हें ट्रेनिंग की ज़रूरत है. प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारे लोग ये काम कर रहे हैं बट बात वही डायलेमास की हो रही है. तो एक डायलेमा हमारा जो गवर्नमेंट सेक्टर का है वहां पर भी मौजूद है कि ट्रेन टीचर जो टीचर्स की ट्रेनिंग होती है वो कॉग्निटिव बेस्ड नहीं होती, वो अगेन फिर रटा सिस्टम और डिफरेंट टेक्निक्स पे ही होती है और एंड जाके वो क्रैमिंग पे ही हो जाता है स्टूडेंट का. तो अभी जो हमारे यहाँ बोर्ड में पंजाब बोर्ड ने भी अपना सारे का सारा ग्रेडिंग सिस्टम करके वो CGPA पे आ गए हैं. सो वी हैव टू चेंज आवर स्टूडेंट्स एंड वी हैव टू चेंज द माइंडसेट ऑफ आवर टीचर्स. वो जो स्कीम ऑफ स्टडीज हैं और दिस दैट उसमें से निकालना है. अच्छा, एक तो ये चीज होगी. दूसरा पॉइंट ये आता है
कि पेरेंट्स और फैमिलीज चाहते हैं कि मेरी भैन का बच्चा ਜਿਹੜਾ ਉਹ डॉक्टर है तो मेरा भी कम से कम डॉक्टर तो जरूर बने, और बच्चा बाद में मेडिकल करके बेसिकली मैंने 2 टीचर्स को ऐसा देखा कि शी डिड मेडिकल और उसके बाद उनके वो 2 प्रॉफ उसने किए और छोड़ दिया। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपने टाइम क्यों वेस्ट किया, आपने डिग्री क्यों वेस्ट की? कहने लगी मेरे नंबर नहीं आए, पेरेंट्स चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं, बट मैं टीचिंग इसलिए कर रही हूँ कि मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं रह गई। तो इस फेज को भी कवर करना कि जो आपका एप्टीट्यूड है उसके मुताबिक लेके चलना। स्टूडेंट्स की कैरियर काउंसलिंग वो हमारे करिकुलम में कहीं भी नहीं है, हमारे स्कूलिंग सिस्टम में कहीं भी नहीं है। हमारे टीचर्स ने जिस तरह से पढ़ा हुआ है, तो मैं उनको भी गलत नहीं कहती, इसलिए कि उनके साथ भी वही हुआ है कि लाइक दैट के अगर हम जाते हैं 90s में और 2000 में, तो ये वाले चैप्टर से एमसीक्यूज आएंगे, ये वाले चैप्टर से आएंगे शॉर्ट क्वेश्चन, ये वाले यूनिट से आ जाएंगे लॉन्ग क्वेश्चन। अब बच्चा वही वही तैयार कर रहा है, स्पेसिफिक टीचर पढ़ा रहे हैं। अब वो बच्चा पढ़ के जब टीचिंग प्रोफेशन में आ गया तो ही और शी इज आल्सो डूइंग लाइक दैट, क्योंकि उसके अपने कॉन्सेप्ट तो वो मिसिंग है बीच में से, उस बुक में से भी जो उसने पढ़ी हुई है। तो उसके वो जो मिसिंग कॉन्सेप्ट्स हैं वो आगे नेक्स्ट जनरेशन को भी, अपने स्टूडेंट्स को भी वो मिसिंग करा रहा है। तो बेसिकली वी हैव टू वर्क ऑन द गैप्स, जो गैप्स हैं वहां पे हमें कवर अप करना है। अब हो सकता है मेरी बात ठीक हो सकता है गलत, तो बट दीज आर माय ऑब्जर्वेशंस ड्यूरिंग माय प्रोफेशनल लाइफ, एंड थैंक यू अगेन फॉर गिविंग मी द चांस। बहुत अच्छा लग रहा है सबको सुन के और अपनी बात करके। तो होपफुली मैं चाहूंगी कि जो एग्री करते हैं वो एग्री करें, और अगर कोई इसको डिसएग्री करता है तो दैट इज आल्सो ब्यूटीफुल फ्लावर्स, कि जब आप डिसएग्री में जाते हो तो आपको एक नया डोमेन, एक नई चीज जो है वो सीखने को मिलती है। थैंक यू सो मच, इट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। Right, Ji. So, Ms. Kamran, Mrs. Kamran, thank you so much for your inputs. Well, connecting back the today's topic, SDG indicators, the last missing piece of 2030. तो आज की जो हमारी डिस्कशन का जो मेन एजेंडा था वो ये था कि हमने उन चीज़ों को हाईलाइट करना है, हमने उन चीज़ों को देखना है कि ये जो मिसिंग पीस है इंडिकेटर्स को सेट करने का, लाइक जैसा कि मैंने हाईलाइट किया था कि स्टिल एज पर करंट रिपोर्ट 193 कंट्रीज आर स्टिल पेंडिंग टू वर्क ऑन इट, that how they will indicate these 17 SDGs. तो यस, होपफुली ज़ीशान जावेद साहब इंशाल्लाह एक गैप के बाद दोबारा आई बिलीव कि इसके ऊपर हम एक दोबारा से अपना एक वेबिनार सेट करेंगे। और मेरा ख्याल है, मेरी एक सजेशन है जो अभी मेरे जहन में आई कि हमने माशाल्लाह बहुत सारे वेबिनार्स कंडक्ट किए हैं डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर। तो मेरा ख्याल है हमें कुछ इस तरह से करना चाहिए कि एक टाइम के बाद उसका एक फॉलोअप सेशन जो है हमें कंडक्ट करना चाहिए वेबिनार की सूरत में, जहाँ पे हम ये देखें कि लास्ट जहाँ पे हम खड़े थे, जो डिस्कशन हमने की थी, उसके बाद उसके ऊपर फर्दर डेवलपमेंट हमारे सामने क्या आई या ग्लोबली उसके ऊपर क्या काम हुआ। ये मेरी सजेशन है कि हमें इसके ऊपर थोड़ा सा वर्कआउट करना चाहिए। सो राइट, Exactly. so thank you so much to all our participants and panelists to participate in the today's topic and for your valuable inputs. बहुत अच्छा लगा, एक बहुत ही मज़ेदार डिस्कशन आज के टॉपिक के हवाले से। और आई बिलीव इंशाल्लाह अगले हमारे जितने भी अपकमिंग सेशंस हैं उसमें भी इंशाल्लाह इसी तरीके से, इसी एंथुजियाज्म को यूज़ करते हुए हम जो है वो अपनी डिस्कशन जो है वो उसको उसी तरीके से करते रहेंगे। और जो हमारा करियर विस्ता का जो मेन मोटिव है, दैट इज़ टू कम्युनिकेट दी पॉजिटिव इंफॉर्मेशन टू आवर व्यूअर्स, ताकि हम चीज़ों को हाईलाइट करके एटलीस्ट उसको अपने प्लेटफॉर्म से दूसरों को कन्वे कर सकें। तो इंशाल्लाह ये जारी और सारी रहेगा। सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। इट्स टाइम टू एंड दिस मीटिंग नाउ। इंशाल्लाह अगली मीटिंग में दोबारा हम कनेक्ट होंगे एक नए टॉपिक के साथ। तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। It's a Thank you. thank you and you're Thank welcome. you. थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।